students. Okay, so that's the Masters in Public Health, Healthcare Management. Those are a few different type of programs that are a bit related to dentistry. That's something that you can enroll in and you come here to practice as well. And the new route that has started recently is to enroll in the current BDS program that is going on here. So this is pretty much similar to what happens in USA. So if you are a dentist, you can in USA आप वहाँ के जो BDS program है, जो DDS है, आप उसमें join कर सकते हैं. As an international dentist, you're supposed to do the second last and last year, which is the third or fourth year of their university, and then you are qualified as a dentist and you can start working directly without any exams. So ये वाला जो route है, ये भी अभी recently इन्होंने introduce किया है और pretty much similar to that. यहाँ पर उनके जो third year, fourth year है, वो हम लोग अगर इसमें हमें admission मिल जाए तो हम वो third year, fourth year कर सकते हैं. Or once we have passed those 2 years, we can start working as a dentist here. So specifically, University of Lancashire, Central Lancashire, उनका प्रोग्राम है वो. उसकी भी थोड़ी सी और डिटेल्स हैं जो मैंने आगे स्लाइड में इंक्लूड की हुई हैं कि उसमें कैसे एडमिशन मिलता है, उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. So we will talk about that later. Okay. So Mahaba, if you can just check the WhatsApp group. I think people are trying to join in. Yeah, I'm just checking in. Okay, that's perfect. So talking about the licensing exams first, the overseas registration exam is conducted by the GDC, whereas the license in dental surgery, that's conducted by the Royal College of Surgeons. So both of these are licensing exams. The advantage of working here in the UK is that at least they recognize our degree, which is our BDS degree. So they say, okay, you've done your BDS. What you need to do is you need to show us if you have done your BDS at the same level and same standard as our students. So आप ये licensing exam दें, ORE या LDS आप pass करें, and then we will let you work here as a dentist. So that's one advantage here. जो मुझे लगता है काफी बाकी countries में नहीं होता. Even USA, sometimes Canada as well, they say कि आप हमारे 2 years of education हमारे पास करें तभी हम आपको यहाँ पे काम करने देंगे. So the difference between the ORE and LDS. ORE, the part 1 exam is conducted twice every year in March and August. 200 students can appear in the part 1 exam, whereas the part 2 is the practical exam. 144 students can appear. The fees for the exam for part 1 is £806, and for part 2, that's almost roughly around £3,000 for it. Whereas the LDS, that's also conducted twice every year. 120 students can appear in the part 1 exam, whereas the LDS 2, 60 students can appear in it. Dr. Ahmed, there are like some participants they're trying to enter. So let me like look into the settings. Let's just pause for like 5 minutes. I'm so sorry. Okay, no, that's fine. Okay, so yes, that's fine. While we're waiting, I can answer your questions, guys. So what are the usual dates for the part 2? The part 2 exam, that depends on when they schedule it. They usually, for ORE part 2, they have scheduled it 3 times this year. So it is usually April, September, and November. That's when they do the part 2 exam. But then you need to go through their website as well, ORE or the GDC website, because they keep scheduling the exams every year. I won't be able to share the whole of the presentation, but if you guys have need anything from the presentation, I can send that over to you. At the end of the presentation, I will share the link of my Instagram profile as well. So that's the best place to contact me. So anything that I'm discussing today, if you need the study guide, if you need the list of the books, that's something that I can share with you guys. That's not a problem.
How difficult is it to secure ORE LDS seat for the exam? So yes, that's a tricky bit. For ORE, we will talk about that later as well. It's pretty much like first come first. They say, okay, for example, on 10th of October, we will open the booking at 8:30 a.m. in the morning. So you're supposed to log in at 8:30, possibly a few minutes before 8:30. और आपको वो रिफ्रेश करनी पड़ती है साइट और जैसे ही उस पर बुकिंग ऑप्शन आता है तो यू हैव टू क्लिक ऑन इट बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड नहीं कर सके तो अभी एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी so if there are 200 seats and there would be at least 1,000 students that are trying to apply for those seats, so it's quite based on your luck as well, on whether you get the seat or not. But I think that's a little that depends on your luck. The first thing to do would be to at least get done with the documentation first, so you have the GDC login and you are able to try for the seat in the first go. Whereas for LDS, it is pretty much like a lucky draw. Once you have done the documentation, there's a ballot system. They do a ballot, and that's when they choose your name. If you're lucky enough and you get your name in the ballot, that's when you can appear in the exam. And so yes, a bit of a different structure for both exams. Yes, that's fine. I can share the study guide with you guys. How can we go for MSc in endodontics, any other clinical subjects? So for that, you need to check the websites for all the universities. There are quite a lot of universities that are quite popular. King's College London, Eastman, UCL, Manchester University, University of Glasgow. So these are a few of the popular universities, Queen Mary. You can check their website on when their programs open and what is required. So you can always apply for those programs yourself. उनकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है हमेशा कि आपने IELTS पास किया हुआ हो, आपकी बाकी डिग्री चाहिए होती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है. So that's something you can always check on the sites. Yes, Sheffield is a very good university as well. Like I said, there are quite a lot of universities. उनमें से काफी जो है वो they are top 5 in the world as well. King's College, UCL. So there are quite a lot of universities that you can choose from. So are the rest of the participants able to join? We are working on it. It will take 10 more minutes. That's fine. You are recording the session anyway, right? So yeah, if anyone wants to view the session, they can also do that later on as well. Yeah, sure. Yeah, that's fine. Okay, so the next question is, can you guide us about the consultancy agencies for the hygienist therapist pathway? Yes, I will go over that with you. I don't know much in detail about the hygienist therapist route because that's not something that I went for, but I do briefly know about it, so I will go over that with you. And if you guys are interested, you can always speak to the administration in ExcemyMedical. I do have a few friends or colleagues who help students out with registering for hygienist therapists. So if you guys want, if ExcemyMedical agrees, then you guys can always have a session with them as well. So that's something I think that would be a good idea. The consultancies, there are quite a few. Some of them charge quite a lot of money. It started with £500 now because there's quite a bit of demand. So it can go up to 2,000 or 2,500 pounds. What they charge for the documentation for the hygienist therapist pathway. Is house job experience enough to apply? Yes. So I will talk about this later as well. The total number of clinical hours that you need is 1,600 hours. So your third year, fourth year clinical bit that you're doing, OPDs में जाके जितना भी काम कर रहे हैं वो, और house job सब मिला के 1,600 hours बन जाता है. So yes, you can apply in mid of your house job or at the end of your house job जब clinical hours पूरे हो जाएंगे. I hear that there's a lot of saturation of dentists in the UK. Do you agree with this, or you still think there are opportunities available? No, there's actually not a saturation of dentists in the UK. यहाँ पर बल्कि जितनी population है उसके हिसाब से dentists कम है. There's a saturation in the cities. I would say London, Birmingham, Manchester, major cities where जहाँ पर लोग ज़्यादा pretty much like how it is in Pakistan के
कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में डेंटिस्ट ज़्यादा मिलेंगे, whereas अगर आप किसी टाउन में चले जाएं, विलेज में चले जाएं, आपको वहाँ नहीं मिलेंगे. तो overall there is a shortage of dentists here, especially after the COVID time, क्योंकि ORE एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर वैसे ही इनको डेंटिस्ट नहीं मिले. तो अभी काफ़ी shortage है, and currently the job market is quite good for dentists. So if you pass your ORE or LDS and you come here, there's a very good chance that you will get a job. Do we need to give OET or IELTS before the exam? So yes, again, this is something that's already included in the presentation. If you are a recent graduate and you have graduated within the last 2 years, then IELTS is exempt from you for you. What you can do is you can just download a form, which is like just an exemption form, in which you would just write that your education was in English. So हम लोग ने जितना भी BDS किया है सब English language में था. So if you're a recent graduate, then you don't need to give IELTS. But if that it's been more than 2 years, then yes, you have to give your IELTS. I will talk about what scores you need afterwards as well. How to prepare for ORE, that will be covered in the presentation. Don't worry about that. Can we surpass ORE and LDS if we have done MDS training here in Pakistan? No, unfortunately, no matter how experienced you are, no matter if you have done MDS, FCPS, or any kind of masters, whether in Pakistan or abroad, there is no way to bypass ORE or LDS. You still have to give those exams to work here. Your GPA for ORE, LDS, no, I don't think your GPA matters, which is a good thing. Whereas if you are applying for your masters, काफी सारे students apply कर रहे होते हैं, so उसमें competition काफी होता है. So yes, that's when your GPA, your CV matters quite a lot as well. कि आपने कितने courses किए हुए हैं, आपको कितना experience है, आपने क्या research की भी है. So that's something that would matter if you're applying for a master's program, but not if you are just applying for ORE or LDS. In reference to the hygienist therapist route, how is the workload and can we take our time to study for licensing exam? Your workload depends on you. So the good thing about working here is that you choose how much you work and your clinical hours. That depends on the employer as well, of course. But if you're like, I want to just work 2 or 3 days a week, that's something that you can do. And yes, quite a lot of students do that. They come here as a hygienist therapist. And now I'm not too sure about this one, but मास्टर्स या इवन एज फॉर नर्सिंग काफ़ी बार जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो जब साथ साथ पढ़ रहे होते हैं एंड दे स्टडी फॉर दोज एग्जाम्स एंड देन दे गिव दोज एग्जाम्स साइड बाय साइड. सो यस, दैट इज पॉसिबल. Can you please arrange another presentation on Ireland, please? I think ExcemyMedical would help you out with that. I personally, yeah, maybe I can link them up with someone if I know someone who knows more about Ireland. So yes, they can guide you regarding that. Preparatory classes are necessary for ORE LDS. For ORE part 1, no, I wouldn't say so. You can study for it yourself. Whereas for part 2, yes, we will discuss that later as well, that you do need to do a few courses to give those exams. How much time does it take to register for dental therapist after sending documents? That's quite variable. It can take up to 6 months to 1 year. And also depends, अगर आपकी documentation पूरी सही है तो वो first go में accept कर लेंगे. आजकल थोड़ा मुश्किल किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने apply किया है तो they are trying to cut that down. This is one part I think where थोड़ी saturation अब हो रही है क्योंकि काफ़ी लोग जो ORE नहीं कर सके उन लोग ने hygienist और therapist route भी apply किया है, तो they make it a bit tricky. एक या 2 बार reject करते हैं वो documentation. They say we need a few more details or few more courses before we accept you for the registration. So that's why I always recommend that it's best to go through an agent because they know how to do your documentation properly. They will be able to guide you on what's missing. So if you go through them, there are less chances that your application will be rejected. What is the pathway for Ireland? Is it the same? No, I think it's a bit different for Ireland. Ireland भी दो हैं, जो UK के साथ नहीं है, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है. जो UK के साथ है Ireland, उसमें I think ORE and LDS works. So Maheba, can we continue the presentation now? Are you still working on it? Just
a second. You can still Okay. answer 5 or more questions. Okay, that's fine. Okay. Can you prepare for ORE after house job? Yes, you can. You can prepare it during or after house job, depends on your circumstances. Part one takes at least 3 to 4 months of focused studying. That's the minimum. क्योंकि पार्ट वन के अंदर आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाली जितनी भी चीज़ें वो सब आती हैं और जो एनाटमी बायोकेमिस्ट्री so 3-4 months of focused studying, that's the minimum. That's what you can do for the part one. Part two depends on your experience. If you are clinically quite good, then you might be able to do it in much less time. But part two is a bit tricky. It's a bit difficult. So I would say prepare properly, take the courses first, give it at least 5 to 6 months of proper revision and practicing, and then go for the part two exam, because of course you would always want to pass the exam in the first go. It's quite an expensive exam. Please explain how to register as a hygienist. I will talk about that later as well. I won't go into too much detail regarding that, but yes, I will guide you on how you can do that. Can you please explain the route for those dentists who have done FCPS and operative? It's pretty much the same. MDS, FCPS, if you have done any qualifications in Pakistan, they are not exactly recognized here. आप आगे जाके शायद कोई अपना पोर्टफोलियो बना के आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि if they recognize this, then maybe they might put you on a specialist list. But even after passing MDS, FCPS, आपको फिर भी ORE, LDS आपको करना पड़ेगा यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए. Any relaxation for part one? No, like I said, there's no exemption to ORE and LDS no matter what you have done. If you have studied in another country and you're from Pakistan, India, Nepal, anywhere outside the European Union, तो आपको ORE or LDS देना must है. What about the MFDS exam? So MFDS is a different exam. It's like a membership exam of Royal College of Surgeons. What it is it has a part one and part two as well. So if you pass those exams, if you are applying for a hospital job, or maybe if you're applying for your master's, then you get more preference as compared to the other candidates. So what the membership exam is, that it's just to show that you are on the same level as the graduates here, as the British graduates. Currently, I've done the MFDS exam, but I don't think I have received any benefit from it other than the fact that I can put the letters after my name. So if you are thinking about going for a hospital job afterwards, or maybe thinking about masters, that's when I would say you can think about giving the MFDS exam. Or MFDS exam की एक और ये भी फायदा है कि if you want to practice in somewhere in the UAE, I'm not exactly sure exactly where, वहाँ पर दुबई, अबू धाबी, शारजा सबके अलग एग्जाम्स हैं, तो उनमें से कोई एक एग्जाम जो है वो आपको एग्जाम्ट हो जाता है. आप उनको 2 साल वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं without passing those exams, but you still need to do their licensing exam after the 2 years to work there. Dr. Ahmed, you can resume with the session right now, but there's just one thing I want to clear to the participants and all, and to you as well. It's basically, we did not know कि इतना great response आने वाला है, so Zoom पे 100 की limit थी, तो अब 100 से ज़्यादा participants आ गए हैं, so limit हमारी reach हो चुकी है, and we like share the recorded session with the other people and with the apology letter as well. So yeah, that's fine. perfect. I think the recording should be good enough. Or अगर आगे जाके और sessions करने हो तो I'm always available. I can always help you guys out with that. So that's not a problem. So we like tried shifting to the Google Meet as well, but situation को देखते हुए, it would be very much chaotic, and you know. So no, it's that we continue here. Yeah, so let's continue right now. फिर वो recording share कर लेंगे बाकी सबके साथ. That's fine. So I will just answer the rest of the questions at the end of the session. Okay, so let's continue. I was talking about the LDS exam. So part one is conducted twice every year. 120 students can appear in part one. I will talk about what comes in the part one exam. It's mostly similar for both ORE and LDS. हमने जो भी BDS में पढ़ा था,
एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, प्रोस्थो, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में आती हैं. It's more BCQs and MCQs. Whereas part 2 is more of the clinical exam. OSCEs होती हैं, एक्टर OSCEs होती हैं, और मैनिकिन प्रेपरेशन होती है. उसमें आपको हैंड्स ऑन वो आपको बता देते हैं कौन सी प्रेपरेशंस करनी. फॉर एग्जांपल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 फिलिंग, or maybe a crown prep, a root canal treatment on a tooth, और वो आपको करके एग्जामिनर्स को दिखानी होती है. Part 1 for LDS, that's 900 pounds. Part 2, अब उन्होंने पार्ट 2 को डिवाइड कर दिया पार्ट 2 और पार्ट 3 में. तो ऑस्कीज और अनसीन केसेस उन्होंने उसको पार्ट 2 बना दिया है, और जो क्लिनिकल जो मैनिकिन होता था ओआरई के अंदर वो उन्होंने उसको पार्ट 3 बना दिया है. अब लग ऐसा रहा है कि वो बहुत 3 पार्ट्स और बहुत अलग अलग बहुत लंबा होगा, लेकिन इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू ओआरई. सिर्फ एलडीएस में ये फायदा है क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 अलग अलग हैं. इफ God forbid you fail one of those exams, for example the part 2, तो आपको वो part 3 आपको वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर. whereas in ORE अगर part 2 के अंदर क्योंकि OSCEs, mannequin, medical emergencies हर चीज included है, even if you fail one component, for example you fail the mannequin, so you will have to keep the whole exam all over again and you will be paying the whole cost, which is almost 3,000 pounds all over again. Whereas in LDS अगर आपने एक पार्ट उनमें से कोई फेल किया तो आप सिर्फ वो पार्ट अगर आपको पे करना पड़ेगा, वो पार्ट आपको देना पड़ेगा वापस. सो व्हिच इज बिट ऑफ एन एडवांटेज. कॉस्ट अगर इन दोनों को ऐड करें दैट्स द सेम एज द पार्ट 2 कॉस्ट फॉर ओआरई. Okay, so now a bit about the documentation for ORE, how you can apply for it. First of all, you need to gather all your documents before you go on and you make your application for the ORE. So उसके लिए सबसे पहले तो if IELTS जरूरी है. IELTS आपका overall 7 होना चाहिए, minimum 6.5 in each component. And like I explained earlier, if you are a recent graduate and you have graduated within the last 2 years, so आपको वो एग्जाम कर देते हैं. आप उनका एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं उनकी साइट से. वो फॉर्म आपने फिल किया, अपने प्रिंसिपल से साइन करवाया दैट योर एजुकेशन वाज इन इंग्लिश, तो वो आपको आइल्स माफ कर देंगे. Second thing is a NARIC certificate. So it's pretty much that you send them your degree, a scan of your degree online, और वो हमारी डिग्री को अपनी डिग्री से कंपेयर करते हैं कि ये डिग्री उसी सेम लेवल पे है कि नहीं. और ये सब ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो जाता है. उसमें आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं, और उसमें अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत है, अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है तो वो चीज़ उसमें मांगते हैं. तो that's pretty much easy. I think they charge about 40-50 pounds for it. तो वो आपने ऑनलाइन आपने भेजा, आपको वो within 10 days time वो आपको वो सर्टिफिकेट भेज देते हैं आने का. So that's a website. If you guys want, I can share this with you as well. और like I said, study guide मेरे पास Microsoft Word document में है, तो I can always share that with you guys. That's not a problem. तो उसके अंदर ये सारी चीजें mention है, सारी वेबसाइट्स जितनी भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब written form में लिखा हुआ उसके अंदर. Okay, so the third thing is your good standing certificate from PMDC or PMC. वो जब good standing आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपने GDC की वेबसाइट पे जाना है. उसमें ORE एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आप ढूंढेंगे. If you Google it, you can find it very easily. ORE एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपने सब लिखनी है. उसमें एक और मेन चीज़ ये है कि आपके वहाँ पर कैरेक्टर रेफरेंस और क्लिनिकल रेफरेंस मांगा हुआ होता है. क्लिनिकल रेफरेंस के अंदर आपको 1600 आवर्स उनको शो करने के मैंने किए हुए हैं. तो उसके अंदर क्लिनिकल रेफरेंस के अंदर उन्होंने 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं. अपने 3 फॉर्म्स अपने किसी भी प्रोफेसर से, अपने किसी भी ट्यूटर से जो जिसने आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और इवन इफ यू हैव वर्कड इन अ प्रैक्टिस और आप उस प्रैक्टिस में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो आप उस प्रैक्टिस के ओनर से या जो भी आपके साथ काम करता है उनसे ये फिल करवा सकते हैं. उसके अंदर आपने लिखना है कि मैंने ये किया था इस प्रैक्टिस के अंदर, या फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने हाउस जॉब में ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम किया तो मैं ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मैंने 500 आवर्स पूरे किए थे, और उसमें मैंने ये चीज़ें की थी, मैंने फिलिंग्स की थी, मैंने जितने भी प्रोसीजर्स किए थे वो थोड़ी डिटेल में लिखना है. और वहाँ पर आपने अपने HOD से या किसी भी जो भी डेंटिस्ट वहाँ पर एम्प्लॉयड है उनसे आपने वो साइन करवा लेना, उनको उसमें उनका ईमेल एड्रेस देना है. दे विल कॉन्टैक्ट whoever has given the email address to check कि आपने उनसे वो साइन कराया, वो वेरीफाई करेंगे कि उन्होंने ही वो चीज़ वो फॉर्म भरा है कि नहीं. तो आपने वो आप
किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके आपको वो टोटल 1600 आवर्स पूरे करने। अगर आपके वो यूनिवर्सिटी से पूरे नहीं हो रहे तो आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू वर्किंग एज एट अ प्रैक्टिस समवेयर, तो यू कैन ऑलवेज यूज दोज क्लिनिकल आवर्स एज वेल। करेक्टर रेफरेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने किसी भी अपने प्रोफेसर से आपने बस करेक्टर रेफरेंस लेना है, उनका उनका नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह उसमें आपको लिख के देना है कि इफ द कैरेक्टर हैज बीन फाइन इफ यू वर रेगुलर during your undergraduation or your house job. So that's pretty much straightforward for ORE. ORE में उन्होंने documentation form के अंदर, application form के अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी थी. So once you are done with the form, you can send it over to the GDC. और उसमें उन्होंने I don't know why उन्होंने कंडीशन बनाई कि आप जब फॉर्म डाउनलोड करते हैं उनसे, तो आपको विद इन 2 months वो फॉर्म कंप्लीट करके उनको भेजना होता है, वरना वो जो आपका लॉगिन है वो एक्सपायर हो जाता है, you have to start all over again. So make sure once you have gathered all the documents, the IELTS, good standing, NARIC certificate, that's when you apply for the application form. And once they send you the application form, उसको as soon as possible उसको fill किया, उसको sign करवाया, और उसको फिर अगर ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन भेज दिया, अगर पोस्ट करना है आपको तो आपने उनको GDC को पोस्ट कर देंगे आपको. Okay. So now the ORE exam. So since I've given the ORE exam, so I know a bit more about it, and I teach for the part 2 as well. So I can tell you a bit more in detail regarding the ORE exam. Whereas for LDS, I do know about it. LDS की इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों ने दिया हुआ है, तो इसलिए उसके कोर्सेज मुश्किल से मिलते हैं थोड़े, और उसकी गाइडेंस भी थोड़ी मुश्किल से मिलती है. That's why people tend to opt for the ORE exam. ORE एग्जाम पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है. जैसे मैंने बताया था कि वो 2 बार होता है हर साल, और ये एग्जाम सिर्फ लंदन में होते हैं, कोई इंटरनेशनल लोकेशन नहीं है इसकी. और जैसे मैं बता रहा था कि इसकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन आई थिंक मिली सेकेंड्स, इवन लेस देन 30 seconds नाउ. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पार्ट 1 एग्जाम्स, यू हैव टू बी वेरी क्विक. उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है आपने तब लॉग इन करना है, एंड यू हैव टू क्लिक एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज द लिंक ओपन्स, और तभी आपको सीट मिलेगी पार्ट 1 के लिए. पार्ट 2 के लिए भी pretty much similar, थोड़ा लक पे डिपेंडेंट है. बट once you're done with the documentation, I think that's the first thing to do. ये चीजें आगे की चीजें सोचने की. Now, what comes in the part 1? It's a computer-based exam. Once you have booked the exam, आप उनके एग्जाम सेंटर में जाते हैं. वहाँ पर कंप्यूटर पे पूरा एग्जाम होता है. पेपर A day 1 जो होता है उसमें बेसिक साइंसेस आती हैं सारी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ज़्यादातर डिटेल में आती है काफ़ी. उसकी कुछ बुक्स भी हैं जो मैंने आगे मेंशन की हुई हैं. We will talk about that later. So part 1 is BCQs and basic sciences, and paper B is clinical dentistry. हमने जितनी भी चीज़ें 3rd year 4th year में पढ़ी थी, प्रोस्टो, एंडो, ऑपरेटिव, everything that comes under in paper B. And उसके अलावा यहाँ के लॉ एंड एथिक्स और हेल्थ एंड सेफ्टी, वो भी वो लोग पूछते हैं. वो ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो वी हैव टू स्टडी दोज थिंग्स. वो यहाँ के अपनी गाइडलाइंस है, हमें इनकी गाइडलाइंस, ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन की, स्कॉटिश गाइडलाइंस, कुछ शीट्स होती हैं, वो सारी अपडेटेड शीट्स अगर आप पढ़ें, आप उसको फॉलो करें, तो यू कैन गेट टू दैट, टू द एथिक्स एंड हेल्थ एंड सेफ्टी बिट एज वेल. Each paper is for 3 hours and it is made of BCQs and EMQs. हाँ, तो ज़्यादातर BCQ फॉर्म होते हैं, या उन्होंने डायग्राम्स दिए होंगे और डायग्राम्स के बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे. एनाटमी के काफ़ी डायग्राम्स होते हैं कि मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, और समटाइम्स इवन लेवलिंग ऑफ द स्कल, वो चीज़ें वो पूछ लेते हैं काफ़ी बार. Whereas the part 2 exam, that's the clinical exam. It is taken over 3 days. Day 1 is the OSCEs. OSCE के अंदर हमारे जैसे BDS के अंदर होता था कि हमें उसके अंदर स्किल्ड OSCEs होते हैं, उसके अंदर एक्टर OSCEs होते हैं. उसमें एक एक्टर पेशेंट बैठा हुआ होता है, आपको वो 5 मिनट्स दे देंगे, सिनेरियो दे देंगे कि आपको ये सिनेरियो है, आपको पेशेंट से बात करनी है और आपको समझाना है पेशेंट को उसकी क्या मैनेजमेंट होगी. तो अलग अलग टाइप के सिनेरियोज होते हैं, वो उसके अंदर वो टेस्ट करते हैं. OSCEs के अंदर स्किल्ड के अंदर सूचरिंग, स्प्रिंटिंग, रबर डैम एप्लीकेशन, इस टाइप की चीज़ें वो टेस्ट करते हैं. और बाकी तो रिटन सिनेरियोज होते हैं कि आपको रिटन OSCEs वो देते हैं. The day 2 is a mannequin.
तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आपको फैंटम हेड के ऊपर वहाँ पर आपको 3 एक्सरसाइज देते थे, 3 एक्सरसाइज आपको करके दिखानी होती है. So that's another day. And then the fourth day is diagnosis and treatment planning. Pretty much similar to the actor house की, जिसमें एक एक्टर पेशेंट बैठा हुआ होता है. आपको ये 1 आवर का होता है. इसमें आपको पहले शुरू के 10 मिनट के अंदर आपको पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेनी है, उस पेशेंट का जो कंसर्न्स हैं आपको उसके बारे में सारे क्वेश्चंस पूछने हैं. देन यू विल गो आउट ऑफ द रूम एंड आपको वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज, पॉकेट चार्टिंग, ये सारी चीजें दी हुई होंगी और आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना है उससे. और फिर आपको वापस उस रूम में जहाँ पर एक्टर पेशेंट बैठा था आपको 10 मिनट मिलेंगे कि आप उसको ट्रीटमेंट प्लान में सारा समझाएं कि आपने कैसे उसको ट्रीटमेंट प्लान किया. और उसके बाद एक काफी ब्रीफ सा 17 मिनट्स का मेडिकल इमरजेंसीज होता है. इसके अंदर हमने जो BLS जैसे किया होता था, जिसमें CPR ट्रेनिंग होती है, वो आती है. आपको अलग अलग सिनारियोज देते हैं कि आपकी अगर प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट फेंट हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे. तो मेडिकल इमरजेंसीज में ये चीजें कवर हो जाती हैं. ये एग्जाम ईस्टर्न डेंटल इंस्टीट्यूट और UCL, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दैट्स सिचुएटेड इन लंदन, यहाँ पर कंडक्ट करते हैं वो लोग. और इसका भी pretty much similar to part 1, कोई इंटरनेशनल लोकेशन नहीं है, सिर्फ लंदन में होता है ये एग्जाम. So for the mannequin exercise, they give you 3 hours. अब वो आपको कोई भी 3 एक्सरसाइज दे देंगे और उसके अंदर 2 मेजर होती हैं, एक फाइनल होती है. उसके अंदर जब आप एक्सरसाइज वहाँ पर कर रहे होंगे तो वो आपको एग्जामिनर्स इन्फेक्शन कंट्रोल, आपकी पोजिशनिंग, आप कैसे बैठे हुए हैं, आप हैंड रेस्ट कैसा है, आप इनडायरेक्ट विजन में मैक्सिलरी में कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें नोटिस कर रहे होंगे. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट कैन कम इन एग्जाम: अमेलगम फिलिंग्स करने का बोल सकते हैं हम लोग, कॉम्पोजिट फिलिंग्स डिफरेंट टाइप्स की, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5. रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स ऑन ऑफ कोर्स ऑन फैंटम टीथ, वो करने का बोल सकते हैं. crown preparations, temporary crown impression taking, rubber dam. These are a few of the examples of what comes in the exam. So as a general dentist, हम ये limited चीजें जो हम लोग करते हैं as a general dentist, so उनमें से ही कोई एक चीज आती है. But to prepare for it, you have to take a proper mannequin course, for which you need to come to London to take the course. उस कोर्स की I would say it can cost around £1,000. तो उसमें आपको वहाँ पर ट्यूटर सिखाते हैं कि ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं यहाँ की गाइडलाइंस के हिसाब से हम कैसे करेंगे और एग्जामिनर क्या चेक करेगा. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग पोस्ट इन्फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन, तो उसके अंदर इनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आपने पहले एक इंडेक्स बनाना है, पटी इंडेक्स, आपने उसको हाफ में कट करना है और फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. और उसमें अगर लिखा हुआ है कि 1.2 मिलीमीटर रिडक्शन होगी बकल साइड की, तो आपने वो 1.2 ही करनी है और आपको हर बार उसको चेक करना है कि वो अंडर रिड्यूस या ओवर रिड्यूस तो नहीं. Okay, so moving on, the OSCEs, it's a 2-hour exam. You have 20 stations, 15 active stations, 3 rest stations, and 2 pilot stations. Active stations में जैसे मैं बता रहा था वो एक्टर OSCEs हो गई, written OSCEs हो गई, skill stations हो गए. Rest stations में कुछ भी नहीं करना होता, बैठ के आपको 5 मिनट्स मिलते हैं ब्रेक के. 2 pilot stations ऐसे होते हैं जिसपे आपको मार्किंग नहीं मिलती, but they're just testing out those scenarios कि वो अगले एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं कि नहीं. So you're not marked for those scenarios. 6 minutes for each station. You get 1 minute to read the task. You have 5 minutes to answer the questions and then to perform the task. So like I was saying, उसमें अलग-अलग components वो लोग check करेंगे. History taking, assessment of patients, communication skills, patient education, clinical judgment, radiographs. So anything that we have learned in the BDS, हमें वो यहाँ पर काफी ज़्यादा thoroughly उसको assess करते हैं. एक दो चीज़ें communication पे बहुत focus करते हैं और empathy पे बहुत focus करते हैं. हम लोग को पाकिस्तान में काम करते हैं, बुरी आदत होती है OPD से कि पेशेंट आता है, चेयर पे बैठता है, हम बोलते हैं अभी कहाँ पेन है आपको, कहाँ मसला हो रहा है. वो बोलता है मुझे इस दांत में मसला, फॉर एग्जाम्पल उसकी एक्सट्रैक्शन की जरूरत है, उसको बोलते हैं ठीक है भाई ये दांत निकलवाने. इतना डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर. हमें यहाँ पर क्योंकि वो एम्पैथी पे बहुत फोकस करते हैं, पहले आपको थोड़ी एम्पैथी शो करनी है कि आई एम सॉरी यू आर गोइंग थ्रू दिस, और बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. और आपके पास no matter if the patient is affording or not, you have to give the patient all the options available, starting from no treatment up to extraction. Or if there's chance of saving the tooth, you have to give those patients the options. So yes, they focus quite a lot on that, on how you speak to the patients, how you communicate, how you show your empathy. और रिकॉर्ड कीपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं वो आप उसको रिटन फॉर्म में नोट्स कंप्यूटर पे आप उसको सेव कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि यहाँ पर लिटिगेशन कल्चर काफी ज्यादा है, कंप्लेन कल्चर काफी ज्यादा है.
if something goes wrong, there's a chance the patient can make a complaint, and if the patient makes a complaint, then it goes to the GDC, or if it can go to the solicitor or lawyers, और वो फिर आपके सब नोट कीपिंग चेक करते हैं कि आपने कितना अच्छे से सब लिखा है, आपने पेशेंट को सही तरह चीज एक्सप्लेन की थी कि नहीं. तो ये चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर वो लोग फोकस करते हैं चीजों पर. Okay, moving on to the medical emergencies. 13 minutes. Sorry, I think I said 17 minutes earlier. So 13 minutes. It's in two part. पहला quick fire round होता है. उसमें आपसे वो सवाल पूछेंगे कि अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आप उसको और उसके ये उसके साथ फॉर एग्जांपल फेंट हो गया, तो आप वो कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी वो बताना होता है. फिर उसके बाद वो आपको जो BLS वाली चीजें हैं, CPR ट्रेनिंग, वो आपको करके दिखानी होंगी वहाँ पर मैनिकिन के ऊपर. And the DTP is almost like a 1 hour. That's 54 minutes. आपने हिस्ट्री लेनी है 10 मिनट पेशेंट की, आपको वो सारी इन्वेस्टिगेशंस देंगे, रेडियोग्राफ्स देंगे, आपके पास 11 मिनट्स होंगे उसके लिए, और आपको ट्रीटमेंट प्लान लिखने के लिए 23 मिनट्स होंगे. आपने हर चीज राइट डाउन करनी है, और फिर आपने उस रूम में वापस जाना है जहाँ पर एक्टिव पेशेंट बैठा हुआ है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट ट्रीटमेंट प्लान यू हैव मेड फॉर द पेशेंट. तो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान करने जा रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे होंगे, वहाँ पर एग्जामिनर्स बैठे हुए होंगे, वो आपको मार्क कर रहे होंगे हर चीज के लिए. Now, regarding the books that are needed for the Part 1 exam, the blue book, that's the Oxford Handbook of Applied Dental Sciences. इसमें सारी basics जो होती हैं वो चीज़ें cover हो जाती हैं. एक और नया edition आया blue book का, वो भी पढ़ लेना चाहिए. उसके अंदर सारी latest जो भी editions है वो की हैं. और Oxford Handbook of Clinical Dentistry pink book, इसकी pictures हैं इस slide के बाद. So these are the ones that are highlighted in yellow. These are the main books that are needed for the exam. और इसके अलावा ये जो रखी ये रेफरेंस बुक्स हैं, इफ यू वांट टू स्टडी मोर इन डिटेल, व्हिच आई यूजुअली सजेस्ट दैट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, यू शुड. तो फिजियोलॉजी इस बुक से थोड़ी और ज़्यादा पढ़ लेनी चाहिए. मास्टर डेंटिस्ट्री वॉल्यूम 1, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इस टाइप से कवर कर लेती है. फिर रेडियोग्राफी की अलग बुक है, और ओडेल काफ़ी अच्छी बुक है. सो दीज आर ऑल रेफरेंस बुक. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम. इफ यू डोंट वांट, अगर आपने ये पिंक बुक ब्लू बुक सही तरह पढ़ ली है, आपने उनकी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस मैं बता रहा था, ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन की जो एडवाइस शीट्स हैं, वो स्कॉटिश गाइडलाइंस है, वो आपने सही तरह पढ़ ली है, तो यू कैन प्रीटी मच पास दैट एग्जाम. For exam, how difficult it is, I would say ORE Part 1 is not as difficult to pass. 60-70% of the students pass that exam in the first go. So if you have studied well enough, you can pass that exam. So you guys must have seen these books in Pakistan as well. They're quite readily available everywhere. There's a pink book, and these are the two blue books. So don't worry, I will share the study guide with you guys. It has mention of all these books, how you're supposed to study, which topic needs to be studied from where. So that will help that in that. But just get your documentation done with all of it before you go on to studying, because that's the more important bit at the moment. Now the expenses for the exam, IELTS की फीस हर साल चेंज होती रहती है. NARIC आपने ऑनलाइन करना है, ऑलमोस्ट 54-55 पाउंड्स उसकी कॉस्ट है. आपकी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की कॉस्ट. फिर ORE Part 1 is 806 pounds. Part 2 is 3000 pounds for the exam. और फिर आपने Part 2 के लिए मैंने जितने भी कंपोनेंट्स बताए हैं, और उसकी मेडिकल इमरजेंसीज, मैनिकिन, इसके लिए कोर्सेज देना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज द वे वी प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, द वे वी प्रैक्टिस हियर इज क्वाइट डिफरेंट. और हम वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग को मार्क करते हुए, वो चीजें कोर्सेज में ही आपको सही तरह बता सकते हैं. सो until unless you take those courses, I think it's pretty much impossible to pass the ORE Part 2 exam, because it is quite comprehensive. इस एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन जब आप कोर्सेज में जाते हैं तो कोर्सेज में आपको वो अपना कोर्स मटेरियल देते हैं. तो ओनली इफ यू फॉलो द कोर्स मटेरियल एंड यू स्टडी, that is more than enough for the Part 2. Or courses can cost anything between 2,000 to 3,000 pounds for all of them. और इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जब आपने कोर्सेज कर लिए, तो कोर्सेज करके आपको वापस आके आपको वो प्रैक्टिस भी करना होता है. Now, because I was in Pakistan when before giving the ORE exam, so मैं आया यहाँ पर, मैंने अपने सारे कोर्सेज लिए, then I went back to Pakistan. मैंने घर पे अपना सेटअप किया, कंप्रेसर, मैनिकिन हेड, जितने वो फैंटम टीथ थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने वो
और मैं घर पे मैंने एटलीस्ट 4 months प्रैक्टिस किया, जब जाके मैं इतना अच्छा हुआ कि मैंने एग्जाम फिर जाके मैं बुक कर सकता था, तब मैंने एग्जाम बुक करके यहाँ पर आ गया. सो यू हैव टू invest a bit in the material as well. That can cost around 1,000 to 2,000 pounds as well. जितनी भी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर मिल जाती हैं पाकिस्तान में. एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर एग्जाम में जो आती हैं वो you have to buy that from here. That's the mannequin head and jaw. और जो टीथ जिस पे प्रैक्टिस करने हैं, हम जो टीथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो फ्रास्को टीथ हैं. They made in Germany. So it is always a good idea to practice on those teeth only. So you can find those teeth from suppliers here. So it's best when you come for your courses, you get the mannequin head and jaw and those teeth, and you go back to Pakistan. बाकी चीजें जितनी भी हैं setup भी पाकिस्तान में readily available हैं. So those two things you need to buy that from here. और बाकी इस चीज के अंदर जो कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड है वो ट्रैवलिंग की, आपकी अकोमोडेशन की और आपकी वीजा फीस है. So that can be quite variable. So I would say the total cost if you pass exam in the first go would be anything around 10,000 pounds. All right. So now moving on, hygienists and therapists, quite a lot of participants were asking about this. So yes, how to register for that? You have to request an application form from the GDC website. आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको थ्रू ईमेल आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं. उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि आपने काफ़ी सारे CPD कोर्सेज करने, काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एटलीस्ट 100 ऑनलाइन कोर्सेज. वो आपकी IELTS ट्रेनिंग, IELTS is pretty much similar to BLS. I'm not too sure whether the one that we do in Pakistan, American Heart Association वाली इस पे काउंट होती है कि नहीं. I'm not the right person to ask about that. So ये ट्रेनिंग आपको हैंड्स ऑन करनी होती है, whereas the CPD courses you can do it from the online sites. Isoform is quite a popular site for those courses, so you can complete those courses on those sites. और learning outcomes कि आपने वो जो courses किए थे आपने उससे क्या सीखा वो आपने लिखना होता है. और इसके अंदर एक काफ़ी मेन चीज़ है कि वो बोलते हैं कि अपना BDS का सिलेबस भेजें, और BDS सिलेबस को आपको कंपेयर करना होता है यहाँ के सिलेबस से. उसके अंदर कोई भी चीज़ जो मिसिंग है, जो यहाँ के सिलेबस में पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती, आपको उसके CBT कोर्सेज कंप्लीट करने हैं. तो वो चीज़ अगर किसी ने ये किया हुआ है और सक्सेसफुली हाइजीनिस्ट थेरेपिस्ट की रजिस्ट्रेशन होगी, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा. And I advise that you go through an agency or someone who knows about the process, so he can guide you much better regarding how to do this bit of the documentation. Because documentation थोड़ी lengthy है, and you have to give it time to complete all the documentation. So that's why I always go through an agency. Less chances कि आपकी documentation reject होगी, और आपके लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा आसानी से आपको वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी GDC से. And it can take up to 6 months for 1 year for them to assess your application. और जब वो application assess कर लेते हैं, वो accept कर लें, तो वो आपको GDC एक नंबर दे देंगे, आपको login दे देंगे. Then you can get your certificate, and then what you do is you look for your employer, someone who is willing to hire you, and you can work as a hygienist or therapist here. Now, because coming from Pakistan, हमें यहाँ पर वीजा चाहिए होता है, तो ORE Part 1, Part 2 एग्जाम्स के लिए विजिट वीजा इज मोर देन इनफ. अगर आपको 6 months का वीजा चाहिए, उनका जो भी प्रोसेस आपने विजिट वीजा के लिए अप्लाई किया और आप उसके थ्रू आ गए टू वर्क हियर, दैट्स कॉल्ड द स्किल्ड वर्कर वीजा और Tier 2 वीजा. सो वंस यू हैव योर GDC रजिस्ट्रेशन, आपने जब एम्प्लॉयर के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया और आपको कोई हायर कर रहा है, तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा, वो आपको Tier 2 वीजा देगा, और फिर आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं. तो अब काफ़ी कंपनीज हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट के लिए वीज़ा देना शुरू कर दिया. नर्सेस के लिए आई एम नॉट टू श्योर कि नर्सेस को एज टू वर्क एज अ नर्स वो वीज़ा Tier 2 वीज़ा देते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने अभी थोड़े रिसेंटली पोस्ट देखे हैं कि वो नर्सेस का भी पूछ रहे थे. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट दैट, बट आई थिंक यू कैन ऑलवेज लुक इट अप कि अगर आपको यहाँ पर आके मीनवाइल एज अ नर्स काम करना है, तो यहाँ पर आके आप काम कर सकते हैं, और मीनवाइल यू वर्किंग यू कैन स्टडी फॉर दोस एग्जाम्स, and you can clear your ORE Part 1 or Part 2 or your LDS. The other route I was talking about was the masters, MSc, MClindant, DClindant, MPH. There's quite an exhaustive list of different master programs that you can do. So once you get you enroll in a master's program, yes, you can come here. You can study along with your masters, depending on how often you have to go for your classes. You would have to invest a bit of money for this route, but if it's something that you can afford, then I would say you should go for it. If you do your MClindant and DClindant,
that means you are doing your specialty in clinical dentistry. So this is pretty much similar to MDS and FCPS in Pakistan. अगर आपने MCLIN and DCLIN कर लिया है, तो you can go on the specialist list. आप as a specialist यहाँ पर काम कर सकते हैं. और लेकिन फिर भी ये करने के बाद भी अगर आप अपने वो स्पेशलिस्ट लिस्ट पे भी आपको फिर भी ORE देना पड़ेगा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए. ORE की कोई एग्जम्पशन नहीं है. और एक चीज जो अच्छी है यूके के बारे में कि इफ यू आर गोइंग फॉर एनी मास्टर्स प्रोग्राम, नो मैटर इफ इट्स 1 year प्रोग्राम और 4 years प्रोग्राम, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिल जाता है. तो आफ्टर यू डन विद योर डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड यू गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years फॉर योर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा. ड्यूरिंग दोस 2 years you can work anywhere, of course not as a dentist unless you have registered with the GDC or as a hygienist, but you'll have the opportunity to come here and work in any other field. Now the latest route, this is called IBDS or BDS for international students. University of Central Lancashire ने ये route अभी recently खोला है. आपने उसमें apply करना है through their website. उसका एक छोटा सा टेस्ट भी होता है. उस टेस्ट के अंदर if you have passed this and they have approved you, तो आपको उनका 3rd year और 4th year पढ़ना पड़ेगा. मुझे लगता है वो 18 months to 24 months के होते हैं वो 3rd और 4th year. और अगर आपको उसके बाद GDC ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो कोर्स किया, तो then you can start working as a dentist directly without the need for exams. The exact cost would be there on their website. As far as I know, the 3rd year is for £30,000 and the 4th year is a bit more expensive. I think it's 40 or 50,000 pounds for that one. So yes, that's quite a lot of money. So if you can afford it, you can always think about this route. And if you want more information regarding this, go to the University of Central Lancashire website. You will find more in detail about how you can go through this route. Okay, so that's pretty much the end of the presentation. मेरा Instagram का जो handle यहाँ पर लिखा हुआ है. If you guys need to contact me, that's the best place to contact me. I would be happy to share any study guides, the list of books, anything with you guys. So you guys can always contact me here. Just tell me about yourself. Put your question in directly if you want to know anything. So I don't use the other social media platforms as much. So I think Instagram would be the best place. थोड़ा देर से apply करूँगा, but you will get a response. So that's nothing to worry about. Okay, that's fine. So before we go on to the questions in the chat section, Maiba, do you have anything that you want to add? Okay, fine, Dr. Ahmed. It's basically it's just a Q&A session right now that we'll conduct in the end. And we are here. So we're just waiting for Dr. Talha to, just join in the meeting. So Okay, he'll just introduce himself and then you guys can carry on with the questions and stuff. Okay, that's fine. So is that fine? Yeah, that's fine. So I'm just going through the chat. And yeah, sure. I will start answering those questions one by one. Perfect. Are there any universities offering scholarships? I'm not too sure about that. You'll have to look for those universities. Best to speak to a consultant as well, an education consultant. बहुत सारे पाकिस्तान में consultants हैं जिनकी universities से affiliations होती हैं और उनको पता होता है कि कौन सी university कौन से program के लिए scholarship दे रही है. Masters के लिए, especially clinical masters के लिए scholarships मुझे लगता है काफी थोड़ा मुश्किल है मिलना. Whereas अगर आप किसी MSc के लिए जा रहे हैं, आप किसी theoretical या research related program के लिए जा रहे हैं, तो आपको scholarships मिल जाती हैं. तो go on to the website. बहुत सारी universities हैं, look it up, go on Google. उनकी websites पे आप अगर research करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी scholarships available हैं, कौन से programs available हैं. I think that would be the best thing to do. How's the job market for dental therapists? So yes.
तो डॉक्टर पूजा, अभी करंटली आई वुड से बहुत सारे हाइजीनिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो डेंटिस्ट ओआरई नहीं दे सके इन द पास्ट 2 to 3 years। तो हाइजीनिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। तो जॉब मार्केट फॉर डेंटल थेरेपिस्ट इज क्वाइट गुड बिकॉज यहाँ पर क्योंकि डेंटिस्ट की कमी है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस ओनर्स क्या कर रहे हैं, वो डेंटल थेरेपिस्ट को हायर कर रहे हैं, और इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर द स्कॉर्स ऑफ डेंटिस्ट, वो अपने पेशेंट्स को फिर डेंटल थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं कि तुम उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लो। सो फॉर अ थेरेपिस्ट आई पर्सनली थिंक कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और उनके लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलना ज़्यादा ईजी है। एंड बीइंग अ डेंटिस्ट, आई थिंक इट वुड बी much more satisfying and much more better for you to work as a dental therapist rather as just a hygienist, because hygienist की scope बहुत limited है, scaling और oral hygiene instructions के अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते वो। So dental therapist would be a good route to go for. Do we work for NHS or do we have to open a private practice? So I am currently working at a NHS/private practice. So NHS का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअल प्रैक्टिस को मिल जाता है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट NHS से मिल जाता है तो वो बोलते हैं कि इस एरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं वो हम केटर करेंगे। तो उसमें हम ऑन NHS कॉस्ट ऑन सब्सिडाइज रेट हम उन पेशेंट्स को देखते हैं, और उसी सेम प्रैक्टिस के अंदर मैं प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इफ द पेशेंट कैन अफोर्ड इट, then I can convince the patient to go for a better option or a private option, or if it's something that's not covered on NHS, for example cosmetic कोई भी काम, teeth whitening, veneers, composite bonding, इस टाइप की कोई भी चीज़ NHS पे cover नहीं होती, तो वो patients privately करवा लेते हैं। Regarding opening your own practice, अगर आपके पास यहाँ का residency नहीं है and you're working on a visa, you don't have that option to open your own practice. Once you have worked here for more than 5 years and you can get your indefinite leave to remain, and you are a British citizen, so फिर आप जो भी दिल चाहे करें, अपनी प्रैक्टिस खोलें, हॉस्पिटल खोलें, कोई भी बिजनेस करें, your opportunities are available to you. So, Dr. Ahmed, it was just let's just discuss the frequently asked questions that were put up by the people in the forums. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So a lot of them asked about the study material and stuff, the scholarships. But I think that all the questions that are there, they will be answered when I go through these the chat box anyway. Yeah. मुझे लगता है 52 और messages हैं जो go through करने हैं, तो ये सारे cover कर लेंगे हम सबको। चलिए, perfect. रह जाती है तो do remind me at the end. We will go over that. Perfect. Kindly share your prep duration for ORE and how good you were in dental school as a student in Pakistan. My prep duration, I would say I studied properly for ORE part 1 for 4 to 5 months. आखिरी के जो 2 महीने थे मैंने सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ सही तरह घर बैठ के focus study की, and that's when I was good enough to give those exams. For part 2, after taking the courses, I gave it at least 5 months. I was doing my job during that time as well, so that's why it took me a bit longer. It was a bit tricky for me to manage the time. So yeah, it took me 5 months to prepare for it before I gave the exam. How good you were in dental school as a student in Pakistan? I wouldn't say I was a really good student, but I was always quite interested in clinical dentistry. So I used to give quite a lot of effort and time to the clinical dentistry during my BDS. So yes, I did think that clinically मैं अच्छा था, और मैंने after my graduation I worked as a lecturer in Ziauddin. तो वहाँ से भी मेरी जो operative skills थी वो काफी polish up हो गई, endodontics, operative सारी चीजें, तो that really helped me. So for students as well as for recent graduates, I would say the more you polish your skills, your clinical skills, whether if you have to work for free anywhere, I think that's the best thing to do, because as a dentist, the clinical skills matter a lot. जब एग्जाम वगैरह सब पास हो जाते हैं और जब पेशेंट आता है आपके सामने बैठा होता है, तो आपकी जितनी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी होंगी, आप उतना अच्छा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, आप उतना अच्छा अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, आप उतना बेहतर कमा सकते हैं. सो योर क्लिनिकल स्किल्स मैटर लॉट. सो just do your observership, go for internship anywhere,
go to government setups जहाँ पर आपकी skills polish up हो. So that's the best thing to do. Is IELTS exempted even though our patient interaction was not in English? Yeah, that doesn't matter. हमारी education English के अंदर थी, तो if you're a recent graduate और within 2 years आपने graduate किया, तो yes, it's exempt for you. For MSc, is it must to have 2 years professional experience? Not for MSc. If you're going for a clinical program like a DClin and an MClin, for example, in prosthodontics or for in restorative, so they do ask for 2 years of postgrad experience. So अगर आपको graduate हुए 2 साल हो गए तो फिर you can apply for that course, but that depends on the university as well. For MSc, I don't think your clinical experience counts that much. आपकी अगर CV अच्छी है, आपके grades अच्छे हैं, and you qualify for it, तो वो आपको फिर accept कर लेंगे. आपका professional experience इतना matter नहीं करता उसके लिए. For hygienists, we have to give any exams. Not at the moment, but there is a speculation कि ये जो hygienist और therapist वाला route है, ये लोग शायद end of the year after December खत्म कर दें. There's no definitive answer to that क्योंकि अभी officially ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आएंगी. और अगर ये रूट खत्म कर देंगे ओवरसीज डेंटिस्ट के लिए, तो लोग शायद उसके लिए भी एक एग्जाम रख दें उसको, ताकि थोड़ा फेयर यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाइजीनिस्ट की सैचुरेशन हो गई है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जो अपने हाइजीनिस्ट हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. सो मे बी दैट विल हैपन, बट इट्स नॉट अ डेफिनेट आंसर. So yes, that covers that hygienist route will be closed soon. So pretty much same. If someone takes the ORE after doing FCPS from Pakistan, will it be considered as a specialist in England after passing? No, not directly. There are some ways that you can register yourself as a specialist. For example, if you've done your FCPS in orthodontics, so if you are documenting your cases, तो इनका अपना एक criteria है कि आप एक portfolio बनाएं, आप उन सारे केसेस को डॉक्यूमेंट करें, पिक्चर्स सारी उसके, और फिर आप वो जीडीसी को सबमिट करें. तो मे बी अगर वो आपको अप्रूव कर लें तो फिर वो आपको स्पेशलिस्ट पे डालते हैं यहाँ पर, बट नॉट डायरेक्टली. यू हैव टू कंप्लीट योर पोर्टफोलियो फॉर दैट, और मे बी यू माइट हैव टू गिव सम स्पेशलिटी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एग्जाम्स फॉर दैट. I've heard about advanced dental general practice program, which is a master's program. Yes, that's a program that College of Medicine and Dentistry has introduced. It's an all-right program. If you have the money and you have to go for a program here, you can go for that. They say कि वो आपको ORE के लिए prepare करें इस exam के लिए. But just like I said, if you can afford it, then go for that program. और ये प्रोग्राम करने के बाद आपको ORE तो वैसे ही देना पड़ेगा, तो और courses, I think you will still need to go for the courses. So I'm not too sure how good it is, but it's one of those programs. If you want to come here and you want to study and you want to prepare for the exam side by side, that's one program that you can think of. Can you guide me what will be the best master's degree in UK for dentists? That's quite subjective. I can't say which master's degree is the best. If you are interested on the theoretical side or research side, then you can look for a research degree. Or maybe if you're interested in the master's in public health, that's what you can go for. If you're interested in the clinical side, then it depends कि आपके interest कहाँ पर हैं. मैं personally, I am quite interested in restorative dentistry. So operative, endodontics, cosmetic dentistry, सारे चीजें cover हो जाती हैं इसके अंदर. तो मैं अभी currently I have started a postgraduate program which is like a part-time degree. तो मैं वो side by side कर रहा हूँ अपनी practice के साथ. So that pretty much depends on you about what you want to do. So if you have one particular field in mind, you want to specialize in that, that's the master's degree you should go for. Or MSc जो है वो ज़्यादा theoretical degrees हैं. If you want to go on the specialist list, then it would be better if you go for the inclined or declined programs. How many attempts are there for part 2 ORE, and are the seats of part 2 ORE also supersaturated like part 1? I think there are 4 attempts. You have to pass those exams with 4 attempts and within the 5 years time frame. Or supersaturated like part 1, not as much as part 1, but yes, it can sometimes be tricky to get the seat for part 2 exams as well. Similar to how you say in UK now doesn't require us to first study 2 years.
And then gives, is there any more country that you can directly give the exams like UK? I'm not too sure about that. I think it's Canada and Australia. But I think you should, someone who has done those exams, that's who will give you a better answer regarding that. उनमें आपको वहाँ पर जाके आपको वहाँ की डिग्री नहीं करनी पड़ती, आप एग्जाम्स पास करके डायरेक्टली पास कर सकते हैं. But then again, you should research a bit more on that. Which visa is needed for the ORE? Just a normal visit visa, that should be good enough to come here to get the ORE exam. How can we apply for that course? I'm not too sure what course you're talking about. If you're talking about the courses for the Part 2 exams, then it's all online. Even for the master's programs, they're all online. You can either go to their website and you can apply for those programs, or you can go to an education consultant and you can apply through them. I think I was talking about University of Lancashire. So yes, if you guys want, I can always send you the link for the university. That's the university that offers the 2-year program for international students. What about the portable unit? Can that work as well? Yes, the portable unit will work, or just a normal compressor. You can get anything that you can get to practice, that will work. Fees for the online courses. I'm not too sure what online courses you're talking about. The ISOFARM one for the hygienist, that's a £36 subscription for a year. So you just pay £36 and you can do countless courses on that. For the other courses, online तो कम ही है, ज़्यादातर in-person ट्रेन करने होते हैं यहाँ पर आके, especially in London. उनकी fees could be anything between £2,000 to £3,000 for the ORE Part 2. Do we need BLS, ACLS certificate for application process? For your hygienist, you might need it. I'm not too sure if the one that is available in Pakistan that counts for that. Someone who's done the hygienist route would give you a better answer. So Mahaba, we have quite a lot of students who are asking about the hygienist and therapist route. So if the participants are interested, and if you guys are ready, I can always link you up with someone who has done this process and who is working as a hygienist here, and he or she can like guide these students for the hygienist route much better. Yes, that would be great, because like almost everyone's asking about the hygienist route. Actually, yeah, अब मैंने वो route खुद ही क्यों किया नहीं है, तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा details में उसके बारे में नहीं बता सकता. Yeah, it's quite much understandable. That's right. Okay, so moving on, how long after Part 2? How long can you go after Part 2? So your Part 2, there's no expiry after you've done the exams. If you've passed the exams, even if you are coming after 5 or 10 years, I think you can still work here. But आपको GST registration हर साल आपकी होनी चाहिए, आपको हर साल वो renew करनी पड़ेगी. फीस होती है आपको £700-800 आपको हर साल GDC को पे करना पड़ता है ताकि आप उनके रजिस्टर पे रहें. Can you apply for ORE after MQ Dent? Yes, you can. What's the total expense for the dental hygienist or dental nurse? Dental hygienist, the form and everything, I think it would be, just the form is £500 to £700. And it depends on who you're taking help from. The agents charge a fees as well. Again, I'm not too sure about this. So a better answer, someone who's done this process will give you a better answer. Can you please explain again what subject to GDC means after IBDS? Subject to GDC means that once you have done your international BDS or IBDS, तो वो GDC आपकी qualification को assess करेगा और फिर आपको बोलेगा कि आप यहाँ पर as a dentist काम कर सकते हैं कि नहीं. तो क्योंकि अभी एक recently start हुआ है ये program, so I don't know anyone who's done it, but I think it would be, अगर उन्होंने ये program शुरू किया, that would be pretty straightforward to start working here as a dentist once you have done that degree. Can you also do any part-time job while studying in the 2 years BDS program? I'm not too sure. On the student visa, there's a limited number of hours that you can work, so you can do any odd job as well. So yes, you can work on the student visa. Is that a good option to go for hygienist after BDS? That depends on you. If you want to go for the hygienist route, then yes, you can go for that. But I'll still suggest that ORE or LDS is the best way to go about, because if you're qualified as a dentist, you would like to work as a dentist. You would like to do everything rather than just working as a hygienist. But then a hygienist की भी यहाँ पर इतनी pay होती है कि you can support yourself. So that really depends on you.
Similar to how you say UK now does not require us to study first 2 years and then give the exam, are there any other countries? I have explained that already. Australia or Canada, उनके एग्जाम्स अगर आप पास कर लें तो आप without the 2 years degree आप practice कर सकते हैं. But yeah, then you will have to take some more information regarding that. What is a peer system for dentists? So after you have worked here for 5 years, that's when you can apply for their citizenship, or yes, that's when you can get the residence here. Is there any expiry for NARIC and IELTS? IELTS is only valid for 2 years. If your IELTS has expired after 2 years, you have to give the IELTS all over again. NARIC certificate की कोई expiry नहीं है. The character certificate that is issued at the end of the house up is acceptable. नो इनका जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो आपको फिल करना होगा, तो वो भी आपको किसी से साइन करवा के भेजना पड़ेगा. रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट वी गेट. ओके, यस, ऑल द रेफरेंस लेटर यू कैन चूज एनी HOD और एनी टीचर हु हैज टॉट यू, और वो अगर आपके 1600 आवर्स पूरे हो रहे हैं तो आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं. पार्ट 1 नहीं, सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सारे एग्जाम सिर्फ लंदन में होते हैं, कोई इंटरनेशनल लोकेशन नहीं है इसकी. How many intakes are there for the master's program? It's quite variable. जो भी program में आप interested हैं, you should go to their website and you should check कि कब intakes होती हैं. काफ़ी university September intake करती हैं, काफ़ी January intake भी करती हैं. So it depends on the university. If you do the MSc in advanced general dental practice from UK, can you work as a dental hygienist therapist? You would still have to complete your application form for the hygienist therapist to work. So even if you're doing the MSc, it does not qualify that you can still work as a hygienist therapist. You will still have to complete that form and get that accepted. Orthodontic therapist is pretty much similar to hygienist and therapist. Again, I'm not the right person to ask about that. Someone who has already done that would give you a better option regarding that. But orthodontic therapist is a very good route as well. I think there's quite a bit of demand for orthodontic therapists as well. After how long can we go for part 2? Does it have an expiry? You have to complete both those exams within 5 years' time, or after you've completed the exams, if you're giving the GDC fees every year, that's when you can work anytime you want. How do you get a passport once you're there? After 5 years of working here as a dentist, you can apply for your residency. No, sorry, I won't know much about the MORTH exam. So MORTH is a Royal College of Surgeons exam. If you pass the MORTH, then you are considered as a specialist, orthodontic specialist here, but I don't know too much about that. What if we apply for master's program, then prepare for worry? Yes, that's possible. I've already discussed that. I'm weak in clinical dentistry, especially in prosto, and our chair position is extremely bad. What do you suggest me to do? So once you take the courses for the part 2 exams, all the tutors will go over that with you as well. And it's quite different working on a patient and working on a mannequin. So I would say if you have taken the right courses and you're practicing that, that's something that you can improve. Can you pursue observership, etc., in UK prior to license exam? Yes, there are some universities that allow you to come here and do electives or observerships. They're called observerships because you can only observe, you can't work, of course. King's College London, University of Glasgow, University of Dundee in Scotland. These are 3 universities that I know about, but then you can Google more as well. They say that if you're in your final year or right after your final year, you can apply to those universities and you can come here and you can do the observership. Does house job count in postgraduate experience? Yes, it does. The clinical hours of house job as well as your 3rd and 4th year, that counts for the clinical hours. Requirements for MClindent, DClindent, you'll have to check the websites. Every university has different requirements. Most cost-effective route, which also delivers the best bang for your buck, in your opinion. Now, because I have just done the ORE, so I think the ORE is the most cost-effective route. However, you have to think इसमें थोड़ी luck involved भी है. अगर आपको उसकी seat नहीं मिलती,
या आप first attempt में नहीं pass करते तो then it can be a bit expensive for you. But ORE is the cheapest route for you. But if you can afford it, then the master's program or the other programs, that's something, then you should go for that. After MSc, can you apply as for lectureship in university? No, it works a bit differently here. You can't really be a lecturer here in the university. You have to do a few more degrees in order to work here as a lecturer. I'm not too sure about that, but if a university is offering you a job after seeing your CV, I think you can still work, but I'm not too sure about that. नो ओवारी पार्ट 1 अगर आपने पास कर लिया तो आपको हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट रूट बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी. If you can introduce us to someone who is working in Ireland and guide us to the pathway. Yes, I will speak to my colleague, the guy I know who works in Ireland. If he is interested in doing a session, then I can link him up with the ExcemyMedical, and they can arrange a session for you guys. Which educational consultant would you recommend for the ORE? For ORE, to be honest, you don't need an education consultant. If you're going through the website, all the information that I've given you, that's more than enough. For courses, the study guide that I will share with you guys, it has the name of a few tutors who are really good. If you want to take the course for ORE Part 1, Dr. Davis is quite common. If you want to take courses for Part 2, Dr. Ibtisam, Emma Dental, and Dr. Nasima, they are quite popular for those courses. What are the starting salary for dentists? For starting, your first year would be your training year. So you would be earning anything between 2,000 to 3,000 pounds, which is good enough to support yourself. So that would be the starting salary. After you're done with your first year of training, that's when your contract changes. Now, depending on where you work, it's quite common कि वो आपको per patient pay करें. तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंट देख रहे हैं दिन में, then that's when you're sorry, but the salary, it is good enough. How is the job market for MPH graduates? I'm not too sure about MPH, but mostly I think MPH के लिए काफी लोग कर रहे हैं, काफी ज़्यादा saturation है. MPH exactly इसके बाद कितनी उसकी demand होगी, I'm not too sure, to be honest. Can you talk about how we can apply for observerships in the UK and what is required for applying? You'll have to check the websites for the universities. Like I mentioned, the King's College London, University of Glasgow, and University of Dundee are 3 universities that I know that offer these observerships. If you go onto their website and you just check the requirements, then you'll get a better idea of what you need to apply for them. Any information regarding MFDS? So yes, I have explained that earlier as well. MFDS is a membership exam, which is conducted by the Royal College of Surgeons. So it does not give you the license to work here. The benefit is if you're applying for a hospital job here in the UK, that's when they would give you a bit of a preference if you have passed your MFDS exam. Or एक दो और फायदे ये हैं कि if you want to work in a few states in UAE, वहाँ पर if you have the MFDS तो वो exempt कर देते हैं 2 साल के लिए exam, but you can work for 2 years and then you can get the exams in UAE if you have passed your MFDS exam. But I personally, I believe I didn't get any benefit from the MFDS because I just came here after passing over. I started working in a practice. मैंने कभी हॉस्पिटल जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया. अगर हॉस्पिटल जॉब के लिए अप्लाई करता तो शायद कोई फायदा मिल जाता. उसके अलावा नाम के आगे थोड़े लेटर्स आ गए तो वो शायद एक फायदा अलग हो. Yes, the ORE Part 2 exams will prepare you for any anything that comes in the exam. ORE Part 2 courses जो भी आप करेंगे वो आपको सारी बुकलेट्स अपनी देंगे, सारा एग्जाम कंटेंट देंगे. जितने भी कोर्सेज हैं वो जितनी भी वो चीजें देते हैं वो if you go through that, that's more than enough to pass those exams. Thank you very much, Amar. I really appreciate it. कोई भी किसी पास questions हो, you guys are most welcome to contact me through my Instagram account.
how much money in Pakistani rupees should we keep for ORE in part 1 and part 2? पाउंड के रेट बहुत ज़्यादा वेरी करते रहते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कितना होता है. सो यू कैन मल्टीप्लाई दैट विद अराउंड 10,000 पाउंड्स, जितने भी बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज में उतने, इफ यू पासिंग द एग्जाम इन द फर्स्ट गो, और आप ट्रैवल कर रहे हो कितना टाइम लग रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल, बट रफली अराउंड 10,000 पाउंड्स इज व्हाट यू वुड नीड फॉर द ORE part 1 and part 2, including your traveling expenses. Yes, so quite a lot of students are again asking about the hygienist therapist route. I will discuss that with Mahima later on, and maybe we can schedule something for you guys later on, course for that as well. Sure. Okay, I think we have covered passing marks for ORE. For part 1, you have to get more than 50%. And for part 2 is a bit more percentile, depends on how the rest of the students perform. The passing ratio for part 1 is 60 to 70%. Part 2, 30% students pass part 2 in the first go. There's no specific criteria on how much marks you need to pass the exam, because it's a bit more percentile in the part 2 exam as well. Okay, I think I've covered all the questions. So yes, it was quite a good session. Thank you very much, guys. Thank you much for the appreciation. Thank you so much, Dr. Ahmed, for this very much informative session. I hope it helped everyone. It was really nice. Yeah, it was quite informative, quite a good session. Yeah, and like I said, you guys good. are most welcome to contact me, and I would be happy to help you guys. Okay. Thank you so much. Thank you very much. I guess we should end the session right now. Yeah, that's perfect. All right. Perfect. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.